We have completed social security. Yes, we've completed social security in the last class, and I told you there are two ways of giving social security. One is social insurance, and the other one is social assistance. You have written there are few laws related to, there are few acts which are social security legislations. 5 acts I made you write. One was Employee Compensation 1923, the Maternity Benefit 1961, the ESI 1948, the Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952, and the Payments of Gratuity Act 1972. If you can recall, when we were studying salary components, and in the sub part of it, benefits, I told you that there are two types of benefits. One is the statutory benefits, and the other one is the non-statutory benefits. Statutory benefits are those benefits which are mandatory, or the employer has an obligation of paying it to you. But the non-statutory benefits, when we talk about non-statutory benefits, then those benefits are good to have in the organization. Okay, if the employer gives it to you, it's good. If they're not, you cannot charge them. They are decided on the basis of financial capacity and philosophy of the top management. ठीक है, तो स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स हम बोले थे कि हम सोशल सिक्योरिटी के बाद बताएंगे. स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स क्या है, वो लॉ में दिया गया है, राइट? सो आज हम लोग जो सोशल सिक्योरिटी में आप 3 तरीके के बेनिफिट्स के बारे में पढ़ेंगे, ESI, PF और ग्रेच्युटी. टुडे वी विल स्टार्ट ग्रेच्युटी. You don't have to go into too much of details. Okay, you don't have to get into the details of law. You just need to know what is gratuity. Fine. So gratuity is what? It's a kind of social security legislation. Social security legislation. I'll make you write. You first understand. This is a kind of social security legislation. Although social security is of 2 different types, one is insurance and the other was assistance. I already told you that we'll focus more on the insurance part because you have to have some awareness about the labor laws. Social security is one of the labor laws. Okay. We'll start with gratuity, which is a social security legislation and it is a statutory benefit also. Okay. What is gratuity? Do you understand what is bakshish? बोलो. एग्जाम्पल बताओ, एकदम रेगुलर लाइफ से एग्जाम्पल बताओ. वो बख्शिश क्या होता है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ऐसे होता है गवर्नमेंट जॉब में अगर जॉब वाला है तो बख्शिश देना पड़ता है. वेटर्स को हम सब टिप वगैरह ये सब देते हैं मैम. हाँ बोलो. वेटर ये सबको मैम टिप वगैरह ये सब देते हैं, वो सब बख्शीश में आ गया. गुड. हाँ, उसी को बख्शिश कहते हैं. और बताइए. Who said? सागर. यस मैम. ओके. टिप जो देते हैं हम, जैसे रेस्टोरेंट्स में आप खाना खाते हैं एंड देन यू गिव टिप टू वेटर. ये समझ में आ गया? ये बताइए, क्या आपका जो खाना है, आप खाना खाए, मान लो कि 500 रुपए का बिल बना, आप अगर उस खाने का बिल नहीं देंगे तो क्या वहां का एम्प्लॉयर आपको चार्ज कर सकता है? बोलेगा ना, बिल तो आपको किसी भी कीमत पे देना है. लेकिन अगर आप वेटर को 1 रुपया भी नहीं देंगे तो क्या वो आपको चार्ज कर सकते हैं? नहीं चार्ज कर सकते. मतलब कि बख्शिश हम अपनी खुशी से देते हैं, हम खुश होकर के देते हैं बख्शिश, राइट? ग्रेच्युटी का आज आप लोग लॉ पढ़ते हैं, लेकिन एक टाइम पे ग्रेच्युटी वाज नॉट लाइक दिस. The form and payment of gratuity has come a long way from being bakshish, simply bakshish, to deferred wages. Deferred wages means कि बकाया राशि, बकाया जो होता है ना, बचा हुआ पैसा,
जैसे कि वेटर, जैसे कि वर्कर को लगता है कि उसका बकाया पैसा है बचा हुआ एम्प्लॉयर के पास, एक तरीके से अधिकार जैसा हो गया। आप रेस्टोरेंट में अगर पैसा नहीं देते हैं खाने का, तो वो बाधिकार आपसे बोलेगा कि आप इसका पेमेंट कीजिए, लेकिन अगर आप टिप नहीं देते तो वो आपको अधिकार से नहीं बोल सकता है कि आपको टिप देना ही है। He'll just request, it's on your will. बख्शीश एज ग्रेचुटी का पेमेंट ऐसे ही स्टार्ट हुआ। इट वाज इनिशियली स्टार्टेड एज बख्शीश, देन इट केम डाउन एज डिफर्ड वेजेस, मींस बकाया पैसा उनका आपके पास है तो उसको बोलेंगे। देन क्या हुआ कि पहले रिटायरमेंट के टाइम पे जो वर्कर्स होते थे, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के वर्कर्स, देखिए अभी की तरह पहले प्राइवेटाइजेशन नहीं थी इतनी, पहले इतना नहीं था चलन कि आप नौकरी स्विच करके दूसरी नौकरी में चले गए, बहुत सारा ऑप्शन है, ये सब ग्लोबलाइजेशन की वजह से ज्यादा आया है ना। उसके पहले जो जहां ज्वाइन करता था मोस्टली वो वहीं से रिटायर करता था, एंड स्पेशली टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रीज एंड ऑल, okay, especially talking about industries. So initially what happened that the employers of large scale industries, they acknowledged the presence of such workers कि भाई आपने हमारे यहाँ बहुत लंबा समय बिताया, बहुत लंबे समय तक आपने हमें सर्विस दी, so I'm just happy about it, so that's why I'm giving you some money added to your retirement benefits. But once the workers got habituated of that money और फिर आप उस चीज को एब्सटेंड करेंगे तो फिर तो वो मांगेंगे पैसा, क्योंकि आदत लग गई। फिर जब इंडस्ट्रीज में इस चीज को रोकने का प्रयास हुआ, कई बार जब वो बोले कि हम इस कंडीशन में नहीं है कि दे सकें वो पैसा, दे रिवोल्टेड, वो लोग विद्रोह कर दिए कि नहीं ये तो हमको चाहिए ही चाहिए, ठीक है, ये हमें चाहिए ही चाहिए, कोर्ट में केस फाइल कर दिए। To your surprise, most of the cases were won by workers. कोर्ट ये बोली कि हाँ ग्रेचुटी का पेमेंट दिया ही जाना चाहिए, उनका अधिकार जैसा है। फिर किसी स्टेट में वो कोर्ट के ऑर्डर पे चल रहा है ग्रेचुटी का पेमेंट, किसी में स्कीम के एग्रीमेंट पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में स्कीम हुआ उसके बेसिस पे चल रहा है, तो एकदम इरेग्युलरिटी थी ग्रेचुटी के पेमेंट में। पहली बार अगर हम लीगल रिकॉग्निशन की बात करें कि लीगली कानूनी तरीके से ग्रेचुटी को कब रिकॉग्नाइज किया गया, तो वो जर्नलिज्म में जर्नलिस्ट वर्कर्स के लिए किया गया, ठीक है, जर्नलिस्ट वर्कर्स जो होते थे उनके लिए किया गया। उसके बाद पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने उसको पास किया 1970 में, उसके बाद केरला गवर्नमेंट ने पास किया 1971 में। लेकिन जब तक कोई कानून केंद्र सरकार से पास नहीं हो तब तक उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं आती है, राइट, उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं आती है। तो इन दैट केस in 1972 the central government passed gratuity as a law, ठीक है, and this was known as the Payment of Gratuity Act 1972. Understood? ये था थोड़ा सा ग्रेचुटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। You'll start writing and side by side I'll start explaining that also. Okay, right. Start writing. You write Payment of Gratuity Act 1972. Payment of Gratuity Act 1972. GRATUITY. GRATUITY. Gratuity payment. GRA, the Payments of Gratuity Act 1972. Okay, written? Write down. This act came into enforcement on 16th September. This act came into enforcement on 16th September
1972. In the country, right now, in the country, the employers of large scale, some employers right now, some employers of large scale, some employers of large scale industry started the tradition of gratuity, to recognize the meritorious service of its workers. To recognize the meritorious service of its workers. Then after the payment of gratuity, started as scheme agreement, court order, etc. ठीक है, कहीं कोर्ट ऑर्डर से चल रहा था, कहीं स्कीम अग्रीमेंट से चल रहा था, कहीं पे कोर्ट में केस फाइल किया गया, कहीं बख्शिश की तरह चल रहा था, नहीं राइट डाउन. However, it got uniformity in the form of, however, it got uniformity in the form of central legislation in the year 1972, when the central government passed the act, within inverted commas, right, the Payment of Gratuity Act 1972. Within inverted comma, right, the Payment of Gratuity Act 1972. Okay. This was a little bit of historical background of how gratuity started. Now, you answer me. When a law is passed by state, what is its scope of coverage? Just within that state. Just within that state. And when a law is passed by central government, what is the scope of coverage? Full country. See, initially, you know that before the abrogation of Article 370, Jammu and Kashmir was a special state where there was its own rules and regulations. It had its own rules. The rules that applied to the rest of the country were not applicable there. But after it has become UT, it is broken down into 2 UTs. So after UT, these laws are also now applicable to Jammu and Kashmir. Okay. So write down introduction, next heading. Introduction. It is passed by central government. It is passed by central government. So it extends to the whole of India. So it extends to the whole of India. Asha, tell me. Did I tell you the other day that what kind of legislation? Okay, tell me, what is this kind of legislation? किस तरीके का कानून है ये?
ये सोशल सिक्योरिटी का कानून है ना। सोशल सिक्योरिटी में पढ़ा रहे हैं, 3 लॉ बहुत सारा होता है लेकिन इसमें पढ़ा रहे हैं। सी यू नीड टू गेट दिस, ठीक है। इवन इन HR यू विल हैव टू स्टडी दिस। यू डोंट राइट डाउन जस्ट फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड, नहीं तो फिर कभी पता नहीं चलेगा कि कौन सा कैसा कानून होता है। When you study HR, लेबर लॉज पढ़ा जाता है, ठीक है। लेबर लॉज का मतलब these are the laws that govern the working of labor. See, laborers were always the exploited category, right? They were always the exploited category. To protect their interest, there were certain labor laws that were enacted from time to time. Social security is just one type of labor law, just one type. That is why when you write social security legislation, you should also have at least somewhere in the mind that there are other laws also. Okay? See, लेबर लॉज है, आप लोगों को एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन वगैरह भी पढ़ना होगा ना। वो किस तरीके का लॉ होता है? नो, दैट इज आल्सो सोशल सिक्योरिटी लॉ। लिखा है ना, बट देयर आर अदर लॉज व्हिच आर डिफरेंट देन सोशल सिक्योरिटी लॉ। लेबर लॉज को ब्रॉडली हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ते हैं। डोंट राइट इट, जस्ट रिमेंबर लेबर लॉज। One is the protective law, the other is the regulative law, the third one is social security law, and the fourth one is welfare. See, जब प्रोटेक्टिव लॉ की बात करते हैं हम, प्रोटेक्शन किस केसेस में, जैसे प्रोटेक्शन हम वर्कर्स को 2 केसेस में देते हैं। एक उनके वर्किंग कंडीशन के केसेस में, कि देखिए पहले फैक्ट्रीज वगैरह में जो काम होता था वो बहुत ही एडवर्स कंडीशन में काम होता था। बहुत छोटी सी जगह है, कंजस्टेड जगह है, बहुत ह्यूमिड है, ना वेंटिलेशन है, ना हवा पास कर रही है, ना लाइटिंग आ रही है, आँख खराब हो रही है, उसमें ठूसे जा रहे हैं वर्कर्स को, ठूसे जा रहे हैं काम करने में। उसकी वजह से कई बार एक्सीडेंट वगैरह भी होता था, क्योंकि सट के काम करेंगे तो वो प्रॉब्लम भी अराइज होगी, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव लॉ जो हम पढ़ते हैं वो हम 2 तरीके का पढ़ते हैं। एक होता है वर्किंग कंडीशन लॉ, वर्किंग कंडीशन का लेजिस्लेशन है, और दूसरा होता है वेज, सबसे इंपॉर्टेंट वेज, जो वेज से डील करता है। ज्यादातर प्रॉब्लम ये रिकॉर्ड है, दिस इज द रिकॉर्ड दैट 60% of the disputes between an employer and employee is because of wage. 60 हर 100 में से 60% जो डिस्प्यूट का रीजन है वो क्या है? वेज। कभी बोनस बढ़ाना है, कभी पैसा बढ़ाना है, आप समझ सकते हैं। रेगुलेटिव, रेगुलेटिव का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस। देखिए, अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में एक चार्ट बना हो कि what teachers don't have to do and what students don't have to do, तो हमें ये पता है कि हमारा लिमिट कितना है, आपको ये पता है कि आपका लिमिट कितना है। ये आसानी होगी कि नहीं एक दूसरे को कोऑपरेट करने, राइट? ये आसानी होगी। यही होता है रेगुलेटिव लॉज। इट रेगुलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयी, just to make industrial environment peaceful and harmonious to work, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी आप जान ही रहे हैं कि सोशल सिक्योरिटी लाइफ के 6 मेजर कंटिजेंसीज में जो दी जाती है, क्यों दी जाती है, सब इसका क्लास हो गया सब। और वेलफेयर फंड जो होता है ना, ये बहुत जहां वर्कर्स की हालत बहुत खराब होती है ना, जैसे कोल माइंस, माइका माइंस, ये सब में, तो वो एक फंड वो लोग खुद क्रिएट करता है, उस फंड से वो लोग हेल्प करता है। बहुत ही गरीबी होती है वहां, इसलिए, ठीक है। वर्किंग कंडीशन लॉज में क्या क्या है देखिए, माइंस में जिस तरह काम होता है, क्या वैसा ही काम प्लांटेशन के पास होता है? नेचर ऑफ वर्क सेम होता है। प्लांटेशन समझते हैं, चाय का बगान, कॉफी का बगान देखे होंगे टीवी वगैरह में, कैसे बगान ऐसे ऐसे बना रहता है। चाय का बगान, रबड़ का बगान, कॉफी का बगान, हमेशा पहाड़ी एरिया पे होता है, बारिश होती रहती है, लगभग साल भर बारिश होती रहेगी वहां पर,
छाता वगैरह ये सब हाँ बोलो बोलो। तो वर्किंग कंडीशंस अलग होता है वहां, फैक्ट्री में वर्किंग कंडीशंस अलग होता है, माइंस में अलग होता है, होगा ना। कपड़े के फैक्ट्री में जो वर्किंग कंडीशन होगा, चूड़ी बनाने वाली फैक्ट्री में क्या वर्किंग कंडीशन वैसा ही होता है? नहीं होता है। बीड़ी सिगार सिगरेट ये सब जहाँ बनता है क्या वैसा ही कंडीशन होता है? नहीं होता है। इसलिए इसमें जो कुछ लॉज है, आप सिर्फ नाम सुन लीजिए, जानने की जरूरत नहीं। कुछ लॉज जो है वर्किंग कंडीशन में, वो कैसे लॉज है? द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, द माइंस एक्ट 1952, ठीक है, द बीड़ी एंड सिगार वर्कर एक्ट 1966, और भी है माइंस द लेबर प्लांटेशन एक्ट 1951, ठीक है। वर्किंग कंडीशन अच्छा रखने के लिए ताकि लेबर को प्रोटेक्टेड फील हो। वेज, वेज को रेगुलेट करने के लिए पहले क्या होता था कि कभी पेमेंट 7 तारीख को मिल गया, कभी 10 को मिला, कभी दिया ही नहीं, कभी 15 को। तो एक रेगुलरिटी होनी चाहिए जिससे कि वो डिपेंड कर सके। आप सोचिए कि सैलरी किसी की इतनी इरेटिक होगी तो कितनी दिक्कत होगी घर चलाने में, होगी ना। तो इसमें भी कुछ वेज के लॉज हैं, जैसे द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट, न्यूनतम मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी सरकार तय करती है कि उससे नीचे आप नहीं दे सकते। न्यूनतम मजदूरी 1948, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, यानी सेम काम के लिए आदमी और औरत को अलग अलग पैसा दिया जाता है। उसी चीज को, हालांकि ये लॉ है फिर भी आज भी ये चीज प्रैक्टिस में है। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, ठीक है। जैसा ग्रेचुइटी का हिस्ट्री पढ़ा ना आपने कि कैसे कैसे वर्कर्स ने लड़ लड़ करके उसको लॉ बना दिया, बोनस भी थोड़ा बहुत वैसा ही है। ये वेज का हो गया, ये वर्किंग कंडीशंस का हो गया। रेगुलेटिव में क्या होता है? जो रेगुलेट करता है रिलेशनशिप को एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, जैसे द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, the industrial standing order act 1948। तो ये सब में सब कुछ मेंशन रहता है सहूलियत से, ताकि वो लिखा हुआ है कानून में कि आप क्या नहीं कर सकते एज एन एम्प्लॉय और हम क्या नहीं कर सकते एज ए मैनेजर, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी एक्ट में कौन कौन सा आया? जितना पांचों आपने लिखा है अपनी कॉपी में वो सब आएगा, ठीक। और वेलफेयर फंड तो वो फंड होता है। तो ग्रेचुइटी के इंट्रोडक्शन में तुम लिखो कि इट इज अ सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन। It is a social security legislation. देखिए अभी आपने देखा ना कि हर एक्ट हर जगह नहीं लगता है ना। उसी तरीके से हर एक्ट का स्कोप और कवरेज भी अलग अलग होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, स्कोप एंड कवरेज। स्कोप एंड कवरेज, लिखिए। The act applies in all industrial establishments. The act applies, स्कोप एंड कवरेज में लिखिए, The act applies The act applies in all the industrial establishments like factories, mines, plantations, oil fields, etc. Oil fields, etc. It applies in those shops and establishments. It applies in those shops and establishments where at least 10 persons are employed.
where at least 10 persons are employed. It also applies in schools, schools, trust, societies, club, etc. It also applies in school, club, trust, society, etc. Done? See, ये तो हुआ कि ग्रेचुटी क्या होता है, कैसे होता है, पर हर एक्ट में के लिए एलिजिबल होने के लिए भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कि आपको कुछ मिनिमम एलिजिबिलिटी पास करना होता है. क्या एलिजिबिलिटी होती है? जैसे ईएसआई में जैसे कि अप टू सैलरी आपकी अप टू 21,000 होनी होती है. कॉम्पेंसेशन में क्या, कॉम्पेंसेशन पढ़ चुके हैं आप लोग? एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन पढ़े हैं? बोलो, आई नॉट आस्क क्वेश्चंस, डोंट वरी. Yes, We have ma'am. covered it. Yes. अच्छा, एलिजिबिलिटी सब बता दो, क्या होती है एलिजिबिलिटी इसकी? You studied it or not studied it? I mean, the eligibility. Employees compensation में ये होता है कि the injury should remain for a minimum of 3 days. 3 दिन के बाद ही आपकी कंपनी आपको कॉम्पेंसेशन देगी. ऐसा नहीं क्या अभी चोट लग गई तो मेरा फ्रैक्चर हो गया करके आप एम्प्लॉयर से पैसा ले लो. नहीं, it should remain for 3 days at least, and it should arise only during the duty or the course of employment, during the employment or the course of employment. Done? उसी वो एलिजिबिलिटी हुई. ग्रेचुइटी की एलिजिबिलिटी क्या होगी कि आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल लगातार सर्विस देना होगा. Not like this, that say for example you have joined the organization, you worked here for 3 years and then you left and you work for some other organization for 1 year and then you came back and worked for another 2 years. That you will not be eligible that way. You have to render the service uninterrupted for 5 continuous years, 5 साल लगातार, तब आप ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल हो. समझ आई बात? राइट. एलिजिबिलिटी कंडीशंस, राइट. Eligibility conditions. If an employee has completed 5 years of continuous service, if an employee has completed 5 years of continuous service, then he is eligible for gratuity. Then he is eligible for gratuity. But this 5 year of continuous service provision will not hold true. See, listen, I'm telling you, not don't write it. But this 5 years of continuous service will not hold true when the employee dies or he gets disabled. Okay, right now. But such provisions shall not apply. But such provisions shall not apply in case of death and disablement of the employee. In case of death and disablement of the employee. Okay. Now next we'll study what are the conditions of gratuity payment. किस conditions में आपको gratuity की payment मिलेगी? जैसे आप रिजाइन कर रहे हैं और आपने 5 साल से ज्यादा काम कर लिया तो मिलेगी. आप अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले रहे, वॉलंटरी रिटायरमेंट सुने, अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले लेना,
उस कंडीशन में भी मिलेगी। डेथ हो गई है तो उसके नॉमिनी को मिलेगी, डिसेबलमेंट हो गया है तो उसी को मिलेगा, सुपर एनुएशन हो गया तब मिलेगा, किसी तरीके की कोई गंभीर बीमारी हो गई है तब मिलेगा ग्रेच्युटी का पैसा। तो गंभीर बीमारी किस कंटिजेंसी को फुलफिल करता है? सिकनेस को करता है ना। तो सिकनेस में ग्रेच्युटी लिखे थे ना तुम लोग, याद आ रहा है अभी? हाँ, सो राइट डाउन कंडीशंस फॉर ग्रेच्युटी पेमेंट। Conditions for gratuity payment. Number 1, superannuation. SUPER, superannuation. ANNUATION. Superannuation. तो confusion है? अच्छा बता, देख लो। Superannuation number 1. Number 2, voluntary retirement. Number 3, resignation. Number 4, death. Number 5, disablement. Number 6, chronic disease. Chronic, CHRONIC, chronic disease. Okay? You keep this. आज की क्लास में यहीं तक रहने दीजिए. नेक्स्ट क्लास में और ग्रेच्युटी कंप्लीट हो जाएगा. This is a small act. You just need to know few things about it. Okay? You are asking superannuation क्या होता है? See, retirement के बाद तो बेनिफिट मिलती ही है, बट सुपरएनुएशन का मतलब होता है कि देयर इज अ सर्टेन एज, समटाइम्स इट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट लैंड. जैसे अमेरिका में 65 है या 67 है कि आप उतने एज तक अपना बेनिफिट्स को अवेल नहीं कर सकते हैं, आप ही का, पर उस सर्टेन एज में जाने के बाद ही आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं. ठीक है, तो वैसे ही सुपरएनुएशन का मतलब होता है कि दिस इज द टाइम फ्रेम व्हिच इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट प्लेस, और जब तक आप उस सर्टेन एज पे नहीं जाएंगे आपको बेनिफिट्स अवेल नहीं कर सकते. ठीक है, अंडरस्टूड? सो कीप इट टिल हियर. ओके, Thank you, ma'am. विल कंप्लीट